So hello all guys, my name is Pramit Tiwari and we will continue our machine learning playlist with our next algorithm that is Ridge and Lasso Regression. So guys पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर रिग्रेशन कैसे काम कर सकता है, काम करता है लीनियर रिग्रेशन के मैथ्स इंट्यूशन देखे थे। अब हम इस वीडियो में देखेंगे रिज और लासो रिग्रेशन क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले आप रिज और लासो रिग्रेशन के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे दो तीन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो कि होता है ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। अब देखो गाइस ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग होता क्या है, चलिए हम समझते हैं। ओवर फिटिंग हम बोल सकते हैं जब हम सपोज करो हमने किसी मॉडल को ट्रेन किया, राइट। सपोज हमने कोई मॉडल लिया, कोई एल्गोरिदम सेलेक्ट किया और हम उसको ट्रेनिंग टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो गाइस होता क्या है कि जब हमारा जो मॉडल होता है वो ट्रेनिंग के टाइम पे एक्यूरेसी बिल्कुल सही दे, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी बिल्कुल सही आए, लेकिन जब हम उस जो ट्रेन डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं, जो हमारा बचा हुआ डेटा होता है, अगर उस पर एक्यूरेसी कम आ रही है तो उसको हम ओवर फिटिंग बोलते हैं। तो जनरली हमारा होता क्या है कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी, जब ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ रही है और टेस्टिंग डेटा की एक्यूरेसी बहुत कम आ रही है, उसको ओवर फिटिंग बोलते हैं। और गाइस ओवर फिटिंग के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लो बायस हाई वेरिएंस, जो कि सबसे वर्स्ट थिंग है। कोई भी मॉडल लो बायस हाई वेरिएंस नहीं होना चाहिए। उसका मतलब आपका मैनेजर आपको, या आप जहाँ भी काम कर रहे हो, आपका मैनेजर या जो भी आपका बॉस हो वो आपको बोल देगा अगर आपका ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो, कि आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है ना। तो ओवरफिट होने का कारण यही है, कभी वो डेटा इम्बैलेंस और बाकी सारी चीज़ों के कारण हो जाता है। तो गाइस अभी ये दिमाग में रखिए, ओवर फिटिंग वो होता है, ओवर फिटिंग की कंडीशन तब अकर होती है जब ट्रेनिंग एक्यूरेसी अच्छी हो हमारी ट्रेनिंग डेटा पे और टेस्टिंग डेटा पे एक्यूरेसी कम हो जाए। टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो इसको लो बायस हाई वेरिएंस बोलते हैं। सिमिलरली गाइस यहाँ पे अंडर फिटिंग होता है। अब अंडर फिटिंग में गाइस ऐसा होता है, जैसे मैंने ओवर फिटिंग में बताया कि जब ट्रेनिंग एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, टेस्टिंग एक्यूरेसी कम होती है, उसका जस्ट अपोजिट होता है अंडर फिटिंग है। अंडर फिटिंग में क्या होता है कि जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम होती है और टेस्टिंग एक्यूरेसी जो होती है ज़्यादा होती है ना। तो जो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अंडर फिटिंग बोलते हैं। तो गाइस ये दोनों ही कंडीशन जो है यहाँ पे ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग, ये आपको मशीन लर्निंग में देखने को मिलेंगे। और इनको कैसे हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यून करते हैं, कैसे हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो गाइस एक चीज़ याद रखिए कि एक अच्छा मशीन लर्निंग मॉडल जो कि अच्छी एक्यूरेसी दे, वो बनाने के लिए हमें एक जनरलाइज मॉडल डिसाइड करना पड़ता है। अब वो जनरलाइज मॉडल ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को हाइपर पैरामीटर ट्यून करके बनाया जाता है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग गाइस मतलब ओवर फिटिंग को रिड्यूस करना, है ना, ये सारी चीज़ें करना, उसको फीचर स्केलिंग की मदद से, है ना, ग्रिड सर्च वगैरह, ये सारी चीज़ों की मदद से हम लोग कैसे उस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हमारा मॉडल अच्छा प्रिडिक्शन दे। तो अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में भी, जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि एक मशीन लर्निंग का मॉडल आ, कब अच्छा मतलब अच्छा प्रेडिक्शन जनरेट कर सकता है, तो अगर आपके टेक्निकल टर्म में उसको आंसर मैं बताऊं तो कोई भी आपसे ऐसा पूछे तो, कि कोई भी आपसे ऐसा पूछे कि एक अच्छा मशीन लर्निंग मॉडल किसको बोलेंगे, तो आप यही बोलना कि जिसकी जो लो बायस हो और जिसका लो बायसिंग हो और लो वेरिएंस हो। तो गाइस लो बायस लो वेरिएंस को हम लोग एक अच्छा मॉडल इस पे हम लोग देखते हैं। सो तो गाइस यहाँ पे ये ऐसा है। अब हम वापस अपने कंसेप्ट रिज और लासो में आते हैं। तो देखो गाइस लीनियर रिग्रेशन में हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि हमारे डेट आप छोटे, हमने जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लिया उसमें हमारा जो डेटा सेट था वो थोड़ा कम था, तो उस पर ज़्यादा हमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिली। लेकिन जब आप बड़े डेटा के साथ काम करोगे, बहुत वास्ट डेटा हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप हो, उसमें चीज़ें अलग अलग हो, इम्बैलेंस हो, इन सब चीज़ों में कभी कभी गैस ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के केस आ जाते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें उसे ट्यून करना है गैस, है ना। तो इन दिस केस guys we will use ridge and lasso regression. So ridge and lasso regression is nothing but these two technique are used to reduce overfitting. अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है कि रिज और लासो क्या होता है, तो गाइस यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट दैट रिज एंड लासो रिग्रेशन आर इन मशीन लर्निंग आर यूज्ड टू रिड्यूस ओवरफिटिंग, है ना। तो गाइस ये ओवरफिटिंग यहाँ पे जब हमारा डेटा ओवरफिट कर जाता है, ओवरफिट का मतलब मैंने समझाया कि टेस्ट एक्यूरेसी कम होती है लेकिन ट्रेनिंग एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और वाइस वर्सा अंडर फिटिंग का भी मैंने बताया। तो हम लोग ये रिज और लासो रिग्रेशन यूज़ करते हैं ताकि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी रहे, बढ़े, है ना।
तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको अंडर ओवर फिटिंग समझाया, अंडर फिटिंग समझाया, जनरलाइज मॉडल समझाया। अब हम देखेंगे कि रिज रिग्रेशन का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मैथ इंट्यूशन कैसा होता है। तो गाइस रिज रिग्रेशन को हम लोग L2 रेगुलराइजेशन भी बोलते हैं, है ना। तो गाइस L2 रेगुलराइजेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गाइस इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न दैट the cost function which we have used in a linear regression, that is 1 upon 2m summation I is equal to m to s theta of x minus y I का whole square. This is nothing but this is actual error minus predicted error. This is nothing, and this actual, the difference between actual error and the predicted error is nothing but it is called residual error, right. And I have explained all this in deep in my previous video. So if you have not watched my previous video, so guys you can surely refer that video. So this is what our cost function, which is used to reduce the imbalance and the overfitting condition on that, and with the help of this we can minimize our error and generate a best fit line. With the help of cost function we can do this. So in the ridge regression there is only one change made which help to reduce overfitting condition, is that with cost function we just add our lambda, which is our penalizing parameter, and slope just I have explained in the previous video. Slope, it depends upon what type of value you, what type of problem you are facing. Like suppose slope can be also called dy by dx, or small change in x-axis, and what is the difference of what is the impact of that change in the another axis. This is what a slope is. So we will do nothing, we will just add penalizing parameter with our simple slope square. This is the formula of ridge regression. So in simple, you can say that ridge regression is called L2 regularization, and ridge regression is used to avoid overfitting in our machine learning model. In general, in linear regression. And third point you can write is that ridge regression is equal to cost function plus lambda, which is a penalizing parameter, plus slope square. Yes, you can write this. Suppose we have taken an example. Suppose we have a lambda value which is equal to 1. Lambda is nothing but I have taken lambda as 1. So guys, here you can see that when we uh, do this by taking a value lambda is equal to 1, with the help of this we get the answer 4. So is in this time we get the value which is lower as compared to the value we have taken above, right. So with the help of that we can do this, and the first value is equal to 4. And if you will see here, after taking after again we have two lines, we are dealing with two lines. In the first line we have two that help in the squaring, and this. So you can see in the simple linear regression, guys, here we are facing the problem that we have the value of error, difference in the error is 4. And here with the implementation of ridge regression we get the value of 2.05. So this is nothing but it reducing the error which you are facing in the regression problem. So with the help of this you can easily tune your model and reduce the overfitting, right. So with the help of this you can easily continue with that. And similarly guys, if we talk about the lasso regression, then the lasso regression also work on the same concept, but in the addition it help in a feature selection. Feature selection is nothing, guys, I will talk in future. We have many thing in feature selection, but it has two key main point, that it avoid overfitting, and it help in a feature selection. Feature selection, in short we can say that feature selection is generating new thing from an existing model, right. So the formula for lasso regression is nothing but a cost function plus lambda mod slope, right. So on the previous video of ridge we have slope square. Instead of slope square we will take mod of slope, right. And slope is nothing, m, which is I have explained that change in the uh, y axis due to x axis, or x axis due to y axis, or the small difference in the cutting line. So guys, this is all about the ridge and lasso regression. So in short, if I will go for a recap in this video, so we can say that ridge and lasso regression in
machine learning are the two important algorithms which are used for hyperparameter tuning or to reduce underfitting overfitting condition, and how they will uh, reduce the condition of overfitting and underfitting by adding a penalizing parameter. In rigid we add lambda and slope square with cost function, and similarly in lasso we will add lambda and the mod of slope. If we have multiple slope, then we can add all the slope and then continue with this. So this is all for ridge and lasso regression, guys. So if you like the video, please hit the like button and subscribe my channel to learn machine learning models and to brief that. So yes, guys, that's all for today's video. Thank you for seeing my session. Just do like button and share with your friend. You can refer these videos for your college university exam, if you are working profession, if you are preparing for gate exam as well. So you can if you want to know basic maths and tuition, so guys, you can refer this video. Thank you, guys.